ऑलराइट जी, सो फाइनली अब हम आईफोन पे iOS पे इसी गेम को विद एक्सेलेरोमीटर एंड सेटिंग ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें सेवरल स्टेप्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि एज पर लाइसेंस, एज पर द टर्म्स ऑफ सर्विस, iOS की ऐप यानी आईफोन और आईपैड की ऐप आप मैक पे ही बना सकते हैं, विंडोज़ पे नहीं बना सकते। तो जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो ये है, या तो जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो ये होगा कि हम यहाँ विंडोज़ मशीन पे, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने गेम बनाई है, यहाँ पे हम एक बिल्ड क्रिएट करेंगे। वो बिल्ड एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर को फिर हम कॉपी कर लेंगे मैक मशीन पे। मैक के कंप्यूटर पे देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एक्स कोड, जो कि iOS की डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उसमें उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और वहाँ से फिर आईफोन पे उसको रन करके देखेंगे। So step one, you go to your build settings and you click on iOS. बाकी it is going to be a release, Xcode and click on switch platform. So जब आप switch platform करेंगे तो फिर ये process दोबारा शुरू हो जाएगा of converting the platform into iOS, and this should take quite a few moments, maybe a few minutes. So let's wait up and see कि ये स्विच कंप्लीट हो जाए। जब स्विच कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम एक फोल्डर इसमें से बिल्ड करेंगे। Yeah, it has been several minutes. It is working. So count this as a usual announcement कि आपके गेम को कन्वर्ट करने में आईफोन के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि मोर देन 7-8 मिनट्स हो चुके हैं। ये अभी करंटली प्रोजेक्ट को स्विच ही कर रहा है। सो प्रोजेक्ट स्विच करना कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एवरी नाउ एंड देन आप कर लें। कभी कभार बिल्ड करते वक्त आप इसको स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप स्विच करें तो एक्चुअली उसकी 2 कॉपीज़ बना लें फोल्डर की। एक को पिछली वर्जन में ही रहने दें। फॉर एग्जांपल अभी मेरा एंड्रॉयड पे था तो उसको एंड्रॉयड पे रहने दें। दूसरी कॉपी को आप ओपन करें और फिर उसको स्विच कर लें, ताकि ड्यूरिंग द स्विच प्रोसेस कोई आमतौर पे मसला होता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको you could go back to the original version. Let's see how much time it further takes from here. जी जनाब, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 15 मिनट के करीब लग गए इसको कन्वर्जन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट की हुई थी। वो रोबोट भी था, कुछ और कार्टून हीरोज़ भी थे, स्टैंडर्ड, इस हर चीज़ को iOS पे इसने कन्वर्ट किया है। मज़ीद टाइम ज़ाय किए बगैर मैं इसको अब बिल्ड करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त विंडोज़ 10 सिस्टम पे ही हूँ और मैं यूनिटी पे iOS की एक बिल्ड, आई विल जस्ट क्लिक बिल्ड। तो बिल्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन जैसे हमने फोल्डर आउटपुट का बनाया था जिसमें एंड्रॉयड का, वेब का, विंडोज़ का था, यहाँ पे मैं एक और iOS का फोल्डर बनाऊँगा और एक्चुअली इसमें मैं एक सब फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा iOS रनर। ये फोल्डर याद रखिएगा, iOS रनर। इस iOS रनर फोल्डर के अंदर हम बिल्ड बना रहे हैं और ये iOS रनर जब बन जाएगा बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो फिर हम इसको कॉपी करेंगे किसी मैक मशीन पे। So let's start the build process. I'm sure it is going to take several minutes, so hang in there. All right, so the process has begun and it is going to take some time. So let's wait for the build process to finish. Looks quick, but no, it's not going to be that quick. टाइम तो लगेगा। Now that's amazing. तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये हमारा iOS रनर का फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर को मैं मज़ीद टच नहीं करूँगा। इस फोल्डर के अंदर एक्चुअली हमारी प्रोजेक्ट बन गया है जो मैक ओएस पे एक टूल होता है हमारा एक्स कोड, उसमें खुलता है। तो एक्स कोड प्रोजेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये हम अब मैक पे लेके जाते हैं। सो प्लीज़ I'll pause this for a second और नेक्स्ट सीन जो आपको आएगा वो ये फोल्डर हम आपको दिखाएंगे कि मैक में कैसे यूज़ करना है।
ओके जी, एज प्रॉमिस्ड अब हम आ चुके हैं अपने मैक ओएस एक्स पे। मैक ओएस में ये वो फोल्डर है iOS रनर का जो हमने यूनिटी से एक्सपोर्ट किया था। सो द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू इज इस फोल्डर को हम खोलेंगे और इसमें आप देखेंगे कि ये एक्स कोड प्रोजेक्ट की फाइल है। ऑब्वियसली ये फाइल तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ये एक्स कोड इंस्टॉल नहीं करेंगे, अगर आपके पास एक्सपोर्ट। सो ये मैं बताता चलूँ कि अगर आपने अपनी गेम iOS पर रिलीज़ करनी है तो यू हैव टू गो टू developer.apple.com और वहाँ से आपको एक डेवलपर अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट $199 पर ईयर है टू कीप योर डेवलपर अकाउंट एक्टिव। और उसके बाद फिर आपको एक अकाउंट मिलता है जहाँ आप अपनी एप्स अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही सर्टिफिकेशन की उनकी पोर्टल है जिससे कुछ फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डेवलपर सर्टिफिकेट्स कहलाते हैं, जो इस एक्स कोड में इंस्टॉल होते हैं और फिर आप अपने फ़ोन के ऊपर अपनी ऐप को चला सकते हैं। सो आई कैन क्विकली शो यू द प्रोसेस कि ये जो एक्स कोड का हमने ये iOS रनर का जो फोल्डर है इसमें ये एक्स कोड प्रोजेक्ट की फाइल है। मेरे पास डेवलपर एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेटअप है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये एक्स कोड लॉन्च करेगा। वंस एक्स कोड हैज़ लॉन्च्ड तो बहुत सारी फाइल्स हैं। आमतौर पे मुझे खुद भी नहीं अंदाज़ा कि ये कौन कौन सी फाइल्स के अंदर हैं, लेकिन मेनली C++ की और .h हेडर फाइल्स हैं और यूनिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। आमतौर पे इनमें से किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ बिल्ड दिस प्रोजेक्ट एंड इफ़ यू आर लकी एंड देयर आर नो एरर्स तो फिर आप उसको एक आईफोन पे चला के देखते हैं। मैं अपना आईफोन भी ले आता हूँ। सो अब प्रोजेक्ट खोलने के बाद जब आपको ये रेडी नज़र आए तो इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें टॉप पे जो भी ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आनी शुरू हो गई। ये com.default company.humanoid intro इसको आप चाहें तो चेंज कर लें। वैसा ही पैकेज आइडेंटिफायर है जिस तरह एंड्रॉयड पे होता है। इसी तरह साइनिंग इन कैपेबिलिटीज़ में मैं आमतौर पे ऑटोमेटिकली मैनेज करवाता हूँ उसको। सो आई कुड प्रॉबली गेट माय टीम हियर एंड ये मसला भी हल हो गया। अगर आपका साइन अप हुआ हुआ है एंड यू हैव डेवलपर अकाउंट तो ये इस तरह से हो जाना चाहिए। जनरल में भी कोई ख़ास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप ये होगा कि हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम सिंपल बिल्ड दबाएंगे। वंस अगेन ये बिल्ड प्रोसेस भी काफ़ी टाइम लेता है। सो लेट्स वेट फॉर द बिल्ड प्रोसेस टू कंप्लीट। You can see that 57 out of 302 source files have been completed. So let's wait for the build process to complete. Okay, you can see that the build has succeeded. So we have a build succeeded message at the top here as well. Without making any changes, अब हम इसको iPhone पे चलाएंगे. So make sure you grab your iPhone. Obviously we cannot do anything if you don't have an iPhone. So physical phone के बगैर गेम हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक iPhone है and the USB cable. Make sure that you're using the default cable जो iPhone के साथ आती है। So let's connect this phone to the Mac. Once you have connected the phone, बाज़ दफ़ा फ़ोन पे वो पूछता है do you want to trust this device or not। पहले मैंने ट्रस्ट किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्ले का बटन है ऊपर टॉप लेफ्ट पे और उसके साथ ये बासित आईफोन आना शुरू हो गया। दिस इज़ द टारगेट डिवाइस जिस पे हम उसको चलाना चाह रहे हैं। सो द फाइनल स्टेप, इफ़ दिस वर्क्स इट विल वर्क जस्ट फाइन। अब हम इस पर प्ले का बटन दबाएंगे और उसके बाद ये फिर थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा इसके ऊपर। बट once the process completes, it says it is installing it. You can probably see the icon and it loads up Unity for us. It's taking a few more seconds. ये मेरा काफ़ी पुराना आईफोन है तो शायद इस पर थोड़ा सा इसको लोड होने में टाइम लगेगा, especially from the build mode. The debug messages have started coming in and we have the runner fellow running around. I'm using the wrong camera पे मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, so I'm going to the road and I'm avoiding the rollers and I hit the, yeah, so I do have a game over screen. If you could probably see that now. Yeah, I'm on, yeah, this should look better. So you see the game over screen now.
and I can restart, buddy, restart. Yeah, and we have this fellow going to this side or to this side. So whatever side you're going to, you are tilting the phone and this guy is moving. So very same game which is running on the PC, it's running on the web, it's running on the Android phone, and now it is running on my old iPhone just fine with the same footballer and the texture. So I have logged it on portrait. Remember हमने इसको portrait mode पे set किया था, तो मोड़ने से गोल घूमता नहीं है क्योंकि हमने accelerometer use करना था. And so that's how you can port your game on an Android machine. So that's pretty much it for this section. We have ported game on web, on PC, on Android, and now on iOS.